Hi everyone, this is Infi Desires Doodle, your number one place for doodles, calligraphy, DIY, and hand lettering videos. So, in today's video, we are going to see 3 easy ways to make bookmark. Let's get started. Now for the bookmark, all we need is a simple craft paper या origami paper जो है आप कोई भी color का ले सकते हैं. So the first one I'll show you very simple. Now here ये जो paper मैंने लिया है, this is yellow in color, and now I'm going to take it in a diamond shape जैसा. फिर नीचे का पोर्शन मैं ऊपर की तरफ फोल्ड कर रही हूँ, like you can see in the video. प्रॉपरली हर साइड से आप उसको ऐसे फोल्ड कर दीजिए इन हाफ. एंड देन इसको ओपन करके व्हाट यू कैन डू इज फ्रॉम द राइट साइड आप वो ट्रायंगल को ऊपर के ट्रायंगल पे ऐसे फोल्ड कर दीजिए एंड देन इन अ सिमिलर मैनर यू फोल्ड द second side also. And then you open it, so this is how you will see it. Now ये जो ऊपर का flap है, you fold that into half till the triangle area you can see. वहाँ पे आप उसको ऐसे फोल्ड कर दीजिए एंड फ्रॉम द राइट साइड यू टक दैट पार्ट इनसाइड लाइक अ पॉकेट एंड इन द सिमिलर वे आप दूसरी साइड से भी इसको कर सकते हैं. एंड दिस इज हाउ बहुत ही इजी सिंपल हमारा पेपर से बुकमार्क इज रेडी. सो दिस इज हाउ यू कैन प्लेस इट in the book where you want to keep the bookmark. Very easy to place and बहुत ही clearly you can see that the bookmark rests towards the right side of your page. Now मैं second वाला कर रही हूँ. मैंने similarly जो हमने किया वैसे ही बना रही हूँ, but now I'm going to do a little bit of different shape in this. तो मैं इसे वाटरमेलन का शेप दे रही हूँ. सो ये जो हमारा पीछे का साइड है वहाँ पे मैंने पेंसिल से मार्किंग करके थोड़ा सा राउंड शेप कर दिया, राइट. एंड देन यू कैन अकॉर्डिंगली ड्रॉ वाटरमेलन जैसा होता है. सो दिस बुकमार्क यू कैन डू एनीथिंग. यू कैन डू अ डोनट, यू कैन डू आइसक्रीम, यू कैन डू अ स्माइली फेस एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स यू कैन डू वेरी इजीली. सो हमारा जो फर्स्ट हमने बुकमार्क देखा वो तो बेसिक रहेगा, द फोल्डिंग पार्ट, एंड रेस्ट लेटर ऑन जो भी आपको डेकोरेशन करना है टू द बुकमार्क यू कैन अकॉर्डिंगली डू. जैसे मैं अभी यहाँ पे फॉर माई सेकेंड बुकमार्क आई एम डूइंग द वाटरमेलन थीम. एंड नाउ फॉर द थर्ड बुकमार्क मैंने मेरा नॉर्मल वाटर कलर पेपर लिया है एंड आई हैव टेकन इट 5 सेंटीमीटर इंटू अप्रॉक्स 10-12 और यू नो मोर देन दैट 5/15 और सो, जितना भी आपको बड़ा चाहिए. एंड मैं यहाँ पे रैंडमली ऐसे एब्स्ट्रैक्ट वे में कलर कर रही हूँ and then I'm going to do a little bit of design. So this is our traditional standard way जो bookmark हम करते हैं, but मैं इसे personalized customized कर रही हूँ. So just one tip here, usually मैं जब भी washi tape भी लगाती हूँ या पेंट सुखाने में बहुत टाइम जाता है sometimes and I'm in a hurry, so I use my hair dryer वो पेंट सुखाने के लिए, and it is also effective to remove the washi tape because then the washi tape doesn't stick onto the paper और पेपर फटता नहीं है.
So this is one handy tip where you can use your hair dryer to remove the washi tape without the paper tearing apart, and the paint also dries very fast. So अब मैं इस पे कुछ डिज़ाइन कर रही हूँ and then our bookmark will be ready. So this is how I wanted to show you very easy way में 3 different types of bookmarks which you can use, make at home, make your own DIY bookmarks and make it and use it for your books. I hope you like this video. Don't forget to hit the like button, the share button, and do subscribe to my channel, and I will see you soon. And I hope everybody is keeping safe. Thank you so much for watching the video. I hope you liked the video. Don't forget to hit the subscribe button, the like button, and do share my video. Stay healthy, stay safe. I will see you soon in the next video.